Hello, बच्चों. CBSE has now come out with its own new marking scheme for the academic year 2021 and 2022. तो वही जो नया एग्जामिनेशन पैटर्न आया है CBSE का, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे नए वीडियो में. Let us quickly take a look at what the circular is and what are the key points in the circular. So ये है CBSE का नया circular which states the examination scheme for the academic year 2021-2022. सो सीबीएसई ने एक साल को दो टर्म में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट टर्म एग्जाम्स लाइकली टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, and second term exams would be conducted between March and April according to the scenarios. Now, first of all, यहाँ पे जो लिखा हुआ है academic session would be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term, एंड ये जो सिलेबस है वो ओवरलैप नहीं होने वाला है, विच मीन्स टर्म वन सिलेबस इज नॉट गोना बी कैरी फॉरवर्ड टू टर्म टू. सो टर्म वन में जो सिलेबस हो जाएगा वो फिनिश हो जाएगा, टर्म टू में नया सिलेबस आएगा, जस्ट लाइक द अर्लियर पैटर्न जो पहले था. ओके, नाउ कमिंग टू द सिलेबस, जो है इनका एक सर्कुलर ऑलरेडी रिलीज हुआ था 31 मार्च 2021 के को, एंड द सिलेबस वुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू दोज पैटर्न्स ओनली. इसमें थर्ड पॉइंट जो लिखा गया है सी पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से, because यहाँ पे efforts will be made to make internal assessments, practical projects work more credible and valid as per the guidelines and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks. Which means बच्चों जो तुम्हारे internal projects होते हैं उसकी अब weightage काफी ज्यादा हो जाएगी, and they will be more credible ways of assessing you rather than your examinations. Okay, this is only for this academic year that the CBSE has come up with these new guidelines. Okay. Now curriculum transaction, again schools will continue to teach in the online mode unless there is a possibility of reopening the schools. Class 9th and 10th जो है उनके internal assessments would include 3 periodic tests, student enrichment, portfolio and practical work, speaking, listening activities and projects. So basically again projects जो है तुम्हारे school के लिए, they are going to hold a good amount of weightage for you all. ओके, गोइंग अहेड, इसको जरा आगे और स्कैन करते हैं. स्कूल्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल एंड दे विल अपलोड द मार्क्स एंड गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह भी सीबीएसई बहुत जल्दी बाहर निकालेगा फॉर स्कूल. नाउ कमिंग टू द एरिया ऑफ योर इम्पोर्टेंस इसकी टर्म वन एग्जामिनेशंस में क्या होने वाला है. सो टर्म वन एग्जाम्स इज गोना बी एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ओनली. सिर्फ एमसीक्यूज होंगे और कुछ भी नहीं होएगा, and these exams would be conducted between November and December 2021. जिसमें एक 4 to 8 weeks का window होएगा for schools to conduct it according to their time and convenience slots. But again, I would like to highlight here that this is only and only an MCQ based paper जिसका टाइम होएगा 90 minutes and it will cover a rationalized syllabus, means like a reduced syllabus आएगा जो cover up हो जाएगा in this particular exam which would be for term 1. तो ये जो टर्म वन एग्जाम है भाई सिर्फ एमसीक्यू हो गया है, एंड द पोर्शन ऑफ टर्म वन अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इज नॉट गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट एग्जाम. ओके, तो ये एग्जाम्स जो होंगे एमसीक्यू होंगे तो ऑब्वियसली एक ओएमआर शीट मिल जाएगा. ओएमआर शीट यानी 4 डॉट्स रहते हैं, एक को सर्कल करना रहता है तुम्हें, एंड योर मार्किंग वुड बी डन. दीज एग्जाम्स वुड बी कंडक्टेड आइडियली इन द स्कूल. ओके, नाउ टर्म टू के बारे में आ जाते हैं. तो टर्म टू का जो एग्जाम है, the board would recognize the board would organize term 2 or year end examination based on rationalized syllabus of term 2. Again rationalized syllabus hoega, maybe reduced, maybe a part of it would be eliminated. Yeah, again they'll come up with a rationalized syllabus. So ये जो examination है, this would be held around March and April of 2022 at the examination centers. These will be your normal 2 hour duration papers जो हम लिखते थे अभी तक, in which would include case-based questions, open-ended questions, and long answer types. In case the situation is not conducive for normal descriptive examinations, a 90-minute MCQ-based exam would be conducted at the end of term 2 also. मतलब अगर situation improve नहीं होती है in this coming days या coming months, तो again term 2 would also be an MCQ-based exam. तो भैया MCQ ही MCQ है, हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति.
सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टर्म वन जो है वो एमसीक्यू होने वाला है, एंड टर्म टू कैन ऑल्सो बी एमसीक्यू इफ द सिचुएशन डज नॉट improve. Otherwise, officially, term 2 is going to be a theory based paper. Okay. And marks of term 2 examination would also contribute to a final overall score. तो overall score जो होएगा that will be based on term 1 and term 2 दोनों को मिला के जो score होएगा that will be your score. Again, the weightage criteria have not yet been released as such, but again they would be depending on different scenarios. Now ये जो scenarios है वो भी वो लोग ने list down किए हुए हैं यहाँ पे. In case the situation of the pandemic improves and the students are able to come to school or centers for taking the exam, board would conduct term 1 and term 2 examinations at school center, and theory marks will be distributed equally between the two exams. मतलब अगर भाई दोनों एग्जाम हो गए as per the guidelines released here, तो दोनों को 50-50% वेटेज दिया जाएगा. बट अगेन देखो बी सिनारियो पे आ जाते हैं. इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर तक स्कूल शुरू ही नहीं हो पाया, बट टर्म टू एग्जाम्स हो गए. तो टर्म वन जो होंगे एमसीक्यू बेस्ड, इट वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम. मतलब घर बैठे एमसीक्यू एग्जाम लिखोगे, बट जो तुम्हारा वेटेज होएगा ये एग्जाम का, जिस जो तुमने घर पे बैठ के लिखा वो वेटेज कम हो जाएगा. तो ओवरऑल वेटेज में अगर जो एग्जाम तुमने स्कूल में लिखा उसका वेटेज ज्यादा होएगा, जो एग्जाम तुमने घर पे लिखा उसका वेटेज कम हो जाएगा. Again, in case the situation of pandemic forces complete closure of schools during March and April 2022, बट टर्म वन एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल. मतलब सपोजिटली नवंबर दिसंबर में कुछ नहीं हुआ, एग्जाम हो गए, स्कूल में जाके दे दिया, बट मार्च एंड अप्रैल में एग्जाम नहीं हो पाते. इन दैट केस रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म वन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम एंड इंटरनल असेसमेंट्स. मतलब टर्म वन के एग्जाम के वेटेज, टर्म वन के मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. एंड जो तुम्हारा वेटेज था अर्लियर 50-50% का रेशियो, वो बढ़ा दिया जाएगा फॉर द फर्स्ट एग्जाम दैट यू हैव गिवन इन द स्कूल. प्लस अगेन इंटरनल असेसमेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. Okay. And the last scenario है, in case the situation of the pandemic forces complete closure of schools and board to conduct term 1 and term 2 exams are taken by candidates from home in sessions 2021 and 2022. मतलब दोनों एग्जाम घर से ही लिखने पड़े, स्कूल ही नहीं खुला ना नवंबर दिसंबर में ना मार्च अप्रैल में. In that case results would be computed on the basis of internal assessment. देखो फर्स्ट वो लोग ने internal assessments डाल दिया है. Theory marks of term 1 and term 2 exams taken by candidate from home in class 10th or 12th subject or to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment. मतलब जो तुम्हारा final result declare होएगा that would be simply based on the term 1 and term 2 exams that you all have given. So I hope तुम सबको idea मिल गया हो कि what are the key changes in the CBSE examination pattern for this academic year 2021 and 2022. Thank you.